करते येईल रेकॉर्ड. So, which is the first phase? This first phase is a menstruation phase. This is a menstruation. बरोबर ना? So, which hormones? काय हार्मोनची सिच्युएशन आहे इथे मेन्स्ट्रुएशन मध्ये? So here there is a bleeding phase. So what is the situation in hormone? Hormone ची सिच्युएशन काय इथे? In this particular phase. FSH कसा आहे? FSH increased आहे. काय रे 2-2.5 तास क्लास घेतला ना संडेला. FSH कसा आहे, LH कसा आहे, त्याच्यानंतर इस्ट्रोजन काय आणि प्रोजेस्टेरॉन काय, सगळे हार्मोन कमी आहेत ना इथे. ऑल हार्मोन लेवल इज लेस. यू कॅन सी इन द ग्राफ असेल इथे कुठे. Yes, see this graph. FSH लेवल, LH लेवल, इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन सगळे कमी आहेत इथे. ओके, मग ही झाली ब्लीडिंग फेज. 5 दिवस देर इज अ ब्लीडिंग फेज, राइट? All the hormonal levels are less. Which is a pituitary hormone and which is a ovarian hormone? Pituitary hormone कुठले आहेत? LH आणि FSH are the pituitary hormone and estrogen and progesterone are ovarian hormone. Okay, ते ओव्हरीतनं रिलीज होत आहे, राइट? त्याच्यानंतर the level of FSH start increasing over here. So here you can see. So पॉझिटिव्ह फीडबॅक आणि निगेटिव्ह फीडबॅक असं आपण केलं होतं. तो ग्राफ ओपन करा मी आणि हा डायग्राम जर काढला ना तो उत्तम तुम्हाला समजेल. So menstrual cycle has 3 phases. Menstrual phase, follicular phase, luteal phase and ovulation is the event which is happening. Okay. कुठे गेला आपला तो डायग्राम? येस. सो या सगळ्या लेवल कमी आहेत. ओके, त्याच्यानंतर हळूहळू काय होत आहे? व्हॉट इज अ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फीडबॅक इथे खाली दिलेलं होतं सगळं. इस्ट्रोजन मीडियमली इन्क्रीज म्हणून तो FSH ला काय करतो? निगेटिव्ह फीडबॅक देतो. व्हेन द इस्ट्रोजन इज मीडियम that is giving the negative feedback so that FSH and LH level are again less. त्याच्यानंतर मग follicles are started developing. Okay, follicles start developing आणि इथे इस्ट्रोजनची लेवल खूप वाढते म्हणून इट इज गिव्हिंग द पॉझिटिव्ह फीडबॅक आणि काय होतं? ग्रॅफियन फॉलिकल इथे डेव्हलप होतं. बरोबर, ग्रॅफियन फॉलिकल फुल्ली डेव्हलप होतं. इस्ट्रोजनची लेवल खूप वाढल्यामुळे पॉझिटिव्ह फीडबॅक जातो. FSH 2 to 3 फोल्ड वाढतं आणि LH सर्ज होतं. त्याच्यामुळे FSH ची लेवल वाढल्यामुळे हा त्याचा मियोसिस कंप्लीट करतो आणि इथून ग्रॅफियन फॉलिकल मधनं ऑन द 14th डे इज रिलीजिंग द ओवम की सेकंडरी oocyte. Yes, Gargi, you can participate in discussion. Secondary oocyte. So, secondary oocyte इथे रिलीज होतं बिकॉज ऑफ द हाय लेवल ऑफ FSH आणि LH सर्ज होतो. LH पण खूप हायटन पीकला जातो. डायग्राम मध्ये बघा, LH खूप हाय लेवलला जातो आणि म्हणून हिअर देर इज अ ओव्ह्युलेशन. ओव्ह्युलेशन एकदा झालं की परत काय होतंय? ओव्ह्युलेशन झालं की हा जो ग्रॅफियन फॉलिकलचा राहिलेला पार्ट आहे, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस हिमोरेझिकम. त्याच्यानंतर दॅट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्युटियम. इथे बघा, सी ग्रॅफियन फॉलिकल आला, ओव्ह्युलेशन झालं, ओव्ह्यूल रिलीज झाला, ओव्हम म्हणजे हा सेकंडरी oocyte आणि बाकीचं जे आहे दॅट इज गेटिंग कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू कॉर्पस हिमोरेझिकम
कॉर्पस हिमोरेजिकम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्युटियम आणि म्हणून काय होतं, प्रोजेस्टेरॉनची लेवल वाढतीये. मग प्रोजेस्टेरॉनची लेवल वाढतीये, तिथे दाखवले बघा, डेव्हलपिंग कॉर्पस ल्युटियम. ओके, आणि मग फर्टिलायझेशन जर झालं तर कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन राहील, आणि फर्टिलायझेशन नाही झालं तर दॅट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स. करेक्ट मॅम? हा मॅम, पण तुम्ही काल म्हटलेला की फर्टिलायझेशन नंतरच ते ओवम होतं. हो ना, मी तेच म्हणते ना, सेकंडरी ऊसाइट पण तुमच्या लेव्हलला एनसीआरटी ने ओव्हम आणि सेकंडरी ऊसाइट हे सेम म्हटलंय, पण कधी कधी म्हणजे ओव्हम इज इक्विव्हॅलंट टू सेकंडरी ऊसाइट ऍज पर युअर एनसीआरटी, पण देर इज अ डिफरन्स बिटवीन सेकंडरी ऊसाइट अँड ओव्हम और ऊटिड. ओव्हम अँड ऊटिड सेम. पण तुम्हाला जर क्वेश्चन जर आला की हाऊ मेनी, सपोजिंग your NCERT is asking you how many secondary oocytes, जसं काल आपण प्रॉब्लेम केले, how many secondary oocyte is released if the reproductive age is 30 years. तर मग आपण त्याला काय केलं, 30 into 12 360 केलं ना. तर समजा ऑप्शन मध्ये आता असं विचारलं, हाऊ मेनी इफ द फिमेल इज व्हर्जिन, आणि आन्सर मध्ये 360 पण दिलं आणि 0 पण दिलेलं, मग आपण 0 चॉईस करायचं, कारण ओव्हम आणि सेकंडरी ऊसाइट वेगळे वेगळे आहे, पण एनसीआरटी ने त्याला पॅरललीच टर्म यूज केलेली. इज दॅट क्लिअर गार्गी? येस मॅम. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. लॅक ऑफ मेन्स्ट्रुएशन. ओके, आता मेन्स्ट्रुएशन कधी कधी नसणार आहे बघा. सो वील डू सम टर्मिनॉलॉजी ओव्हर हियर नाउ. चलो, सो सम टर्मिनॉलॉजी that might have given in your module प्रिंट करून आणलं असेल तर त्याच्यात दिलेलं असेल. ओके, सी there is a amenorrhea. So we are the eutherian mammals because we are the placental mammals. We produce placenta. So there is a amenorrhea. Some terminology you can write down. No? Amenorrhea. Amenorrhea is absence of menstrual cycle. Absence of menstrual cycle. आता menstrual cycle कधी कधी नसणार आहे. Either due to some defect there will be absence, or then during the gestation period. During the gestation period there is a no menstrual cycle. No menstrual cycle during the gestation period. Okay. Ma'am, even after parturition for 6 months नसतं ना? Yeah, तेच मी सांगते आता. लॅक्टेशनल ॲम्नेरिया. लॅक्टेशनल ॲम्नोरिया मध्ये कीप रायटिंग. लॅक्टेशनल ॲम्नोरिया मध्ये स्पेलिंग कळतायत का? AM ॲम्नोरिया. लॅक्टेशनल ॲम्नोरिया मध्ये again there will be the temporary suspension of menstrual cycle for 6 months. Okay, in the lactational amenorrhea. आणि म्हणून आपण कॅल्क्युलेशन जेव्हा केलं, if the lady is having say 3 children, how many oocyte will be produced in the 30 years of reproductive age? है ना, त्याच्यातनं आपण हे वजा केले होते, जस्टेशनचे 9 महिने आणि प्लस 6 months, so total 15. If the woman is once remaining pregnant, there will be for 15 months there will be no menstrual cycle. So lactational amenorrhea, when the baby is breastfeeded, that is a lactational amenorrhea. जोपर्यंत बेबी ब्रेस्ट फीड करतं, जनरली आपण असं म्हणतो की 6 महिने कम्प्लिटली ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग, so that time there will be no menstrual cycle. Okay, लक्षात घ्या. Then the third is a precocious puberty. Precocious puberty. Generally 12 to 13 year
is a menarche period. Menarche is, what is a menarche? Puberty. Okay, menarche is a starting of menstrual cycle. When the menstrual cycle start is a menarche. सेल गेले कारण तिथून होतं का चालू? परत मी दाबलं. Wait, Gargi, some problem, technical problem. Okay. That? Okay, so menarche is a start of Starting of menstrual cycle. Yeah. So that is generally 12 to 13 years average age we consider. But precocious puberty is menarche starts before the age of 8 years. Menarche start before the age of 8 years is a precocious puberty. Okay. The next term is a dysmenorrhea. The next is a dysmenorrhea. Dysmenorrhea. This is a painful menstruation. Painful menstrual cycle. Okay. Menorrhagia. पेनफुल मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे Dysmenorrhea. नाही पण मग त्याच्यामध्ये पेनफुल मतलब एक्झॅक्टली Painful काय? matlab there is a you can say a great abdominal discomfort. अच्छा. Okay. Menorrhagia, a normal blood loss in the menstrual cycle is 50 to 80 ml. Normal. That is a normal blood loss in one menstrual cycle. But when the blood loss is increased more than 100 ml, increased more than 100 ml is a menorrhagia. Okay. And then next is a polymenorrhagia. Polymenorrhagia. Normal menstrual cycle is of 28 days. है ना? Normal menstrual cycle is 28 days. In polymenorrhea, menstrual cycle is of 2 to 3 weeks only. Every after 2 to 3 weeks, there is a menstrual cycle. That is a polymenorrhagia. Getting this? Yes, ma'am. Yeah. Now, in some under certain circumstances, now under certain circumstances, there are few terminologies and how the uterine or ovarian changes are happening. Plain so here I'll write. Chalo. Now ovarian, you can make a chart. Ovarian change
आणि ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात ओव्हॅरियन चेंज, देन देर इज अ युटेराइन चेंज, then there is a menstrual cycle and fertilization. If we cut some part of the uterus, like say tubectomy first. So if we do tubectomy is what? Removal of fallopian tube. Okay. So if we do the tubectomy, ओव्हॅरियन चेंज होतील का? ओव्हरी मध्ये चेंज होतील का? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सपोजिंग से दिस इज द युटेरस, दिस इज अ फॅलोपियन ट्यूब, इथे आहे ओव्हरी. वायोलेट, okay. Chalo, so supposing this is a rough diagram of uterus, this is a fallopian tube. If I remove this uterus, ये मैं निकाल दूं uterus, sorry fallopian tube, not uterus. I am removing this fallopian tube. तर ओव्हरी मध्ये चेंजेस होतील का? Here कैसे नो? नाही. ये डायग्राम तुमको समझा, मैं ये इरेज करती हूँ, ठीक है? ओ गॉड, सब इरेज कर दी. ओ माय गॉड, चलो वापस से लिखना पड़ेगा. ओवेरियन चेंज, फिर क्या लिखा था मैंने? यूटेराइन चेंज, फिर क्या लिखा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखो, एंड फिर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज अ ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे निकालती हूँ, ये यूटेरस है, यहाँ पे ओवरी है, तो ये ट्यूब को निकाल दिया ट्यूबेक्टोमी में. ओवेरियन चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यस और नो? नो. व्हाई नो? बिकॉज ओव्हरी मध्ये का चेंज होईल? अगर फॅलोपियन ट्यूब ओवरी में चेंज होगा ना? यस होगा, क्योंकि ओवरी में चेंज तो ट्यूबेक्टोमी का कोई रोल ही नहीं है ना उसमें, ओवरी चेंज करने में. ओवेरियन चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है? ओवेरियन चेंजेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, FSH एंड LH. अच्छा, वैसे आप जो यूटेराइन चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन. वैसे अभी यूटेराइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ट्यूबेक्टोमी लिखो यहाँ पे, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब. हाँ, तो यूटेराइन चेंजेस इज हैपनिंग बाय बिकॉज ऑफ द ओवेरियन हार्मोन. यूटेराइन चेंजेस कभी होगा? वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनना चालू होगा, है कि नहीं? यूटेराइन, फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस और बढ़ने लगेगा, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब को सिक्रीशन, सॉरी एंडोमेट्रियम में सिक्रीशन बढ़ा देता है, सब ग्लैंड्स उसके एक्टिवेट हो जाते हैं. आर यू गेटिंग दिस? Yes or no? ओके. मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा? होगा. एंड फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब निकाल दिया, तो एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. चलो अभी सेकेंड, इसका टर्म भी तुमको समझेगा, हिस्टेरेक्टोमी. Hysterectomy is removal of uterus, only uterus. Hysterectomy, only uterus, removal of only uterus, hysterectomy. Ovarian changes होंगे?
तो ये सिर्फ यूटेरस का पार्ट निकाल रहे, दिस पार्ट, बाकी सब इंटैक्ट है। तो ओवेरियन चेंजेस होंगे, यूटेराइन चेंजेस नहीं होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही तो शेड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, तो उधर जाएगा, फिर उधर से तो वो डिसइंटीग्रेट ही होगा। हाँ, पर फर्टिलाइजेशन कब, कि वो प्रेगनेंसी अचीव करे, इज अ फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस गार्गी? बायलैटरल, यस मैम। या उफोरेक्टोमी, बायलैटरल उफोरेक्टोमी मतलब क्या? बोथ ओवरीज आर रिमूव, बोथ ओवरीज आर रिमूव, ओवरीज रिमूव किए तो ओवेरियन चेंज होंगे? नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। क्या हो रहा है? अरे ये गार्गी नहीं, हाँ, ये उसको भी आदत नहीं रही, मुझे भी आदत नहीं रही अभी। चलो, मॅम तुमचा स्क्रीन नीट नाही दिसत आहे. हाँ आला, हा आता आला. ठीक आहे, तो थोड्या वेळात परत येईल, जरा ये. डान्स करतोय, हा, त्याला आला जायचं परत. होतं गार्गी सोबत. यूटेराइन चेंजेस होंगे? यस. कैसे होंगे? यूटेराइन चेंजेस बेस्ड ऑन द ओवेरियन हार्मोन, तो वो नहीं होगा, यूटेराइन चेंजेस नहीं होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? नहीं होगा, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, एंड द लास्ट नाउ इज, ये बायलैटरल उफेरेक्टोमी था, अभी यूनिलैटरल, ओनली वन ओवरी इज रिमूव, ओनली वन ओवरी इज रिमूव, तो क्या क्या होगा? सब होगा। क्लियर? ये समझा? ओनली वन ओवरी, सो यूनिलैटरल उफेरेक्टोमी। इसमें हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा डिले हो, menstrual cycle is delayed or little irregular, but yes, everything can happen. And कभी करते ये bilateral या unilateral उफेरेक्टोमी, सपोजिंग कैंसर नहीं, एंड इन नॉर्मल सिचुएशन की प्रेगनेंसी अचीव हुई एंड इम्प्लांटेशन यूटेरस में होना चाहिए। इम्प्लांटेशन अगर फैलोपियन ट्यूब में ही होना चालू हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल, and तभी in the some cases, in serious cases, you have to remove the tube and ovary. वापस रिपीट करो ना. नहीं, and that is called as a ectopic pregnancy. नहीं नहीं, निकाल ही देते हैं, because on one this thing you can leave. It depend की सिचुएशन कैसी है, कितना इम्प्लांटेशन हुआ है। कोई कोई फीमेल को लगता है कि ये नॉर्मल पेन होगा, बट वो पेन जब बढ़ता जाता है तो पूरा बरी हो जाता है वो एम्ब्रियो तब तक, एंड दैट बिकम्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, इज अ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेनी फीमेल इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, इक्टोपिक, ECTOPIC, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, when implantation occurs in fallopian tube rather than uterus. हाँ, खत्म। ये समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा विथ हार्मोन्स? When implantation is outside uterus, outside uterus, so mostly it happens
in fallopian tube. Then it is a ectopic pregnancy. Okay. So I hope with this you might have the clear idea. FSH LH level in first phase is all levels are low. Second phase may increasing. On 14th day there is a hump. And one more thing, supposing you get a question, supposing a female is having the menstrual cycle of say 30 days, when is the ovulation happening? When is ये important है? नहीं. So last के 14 days are always constant. Last के 14 days are always constant. So 30 minus 14. 16th day पे ovulation. Supposing you get a question, female is having the menstrual cycle say of 35 days. Minus 14, ये simple formula. Last 14 days are always constant. So ovulation is on 21st day. लिख के रखो, last के 14 days are always constant. So you can find out the period of ovulation, and hence doctor asks you, the pregnant female, when she goes to doctor, कि कभी था last का cycle, and from that they count your expected date of delivery, parturition. एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कौन बढ़ाता और कौन पहले एंडोमेट्रियम थिकनेस करता है? ईस्ट्रोजन. और उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन. क्लियर? And we have done so many biostatistical questions on that. I hope you might have there in your memory. Chalo. Now the types of eggs. Make next chart. Types of eggs. Yes. अगर गार्गी ये बंद होता है तो वापस से ज्वाइन करना. हाँ, आज इसको बंद करने का मन हो रहा है. सेम लिंक का. हेलो. हाँ गार्गी. हम सेम लिंक का. ओ सेम लिंक. ठीक है. Types of eggs. First, amount of yolk पे how the eggs are classified based on the amount of yolk. Okay. The first one is a yolk काय करतो? Nourishment. हाँ. So first is a alacithal egg. No yolk. Alacithal egg is a no yolk, negligible or no or negligible yolk. So if you do not remember कि yolk क्या करेगा तो लिख के रखो, nourishing the developing embryo. So alacithal egg humans में क्यों? अदर क्या? Example is human. They have a placenta, so placenta, through placenta they are nourishing, तो उनको yolk की जरूरत नहीं है. Okay, you can even say microlacithal egg. Microlacithal egg, very less amount of yolk, very less. जा रही हूँ ना आगे. Microlacithal egg. Other than human, there are certain placental mammals. जो placental mammals है, even they can have this microlacithal egg. Very negligible or minute amount of yolk. Third is a mesolacithal egg.
मैम हेलो Yeah, moderate amount of yolk. Moderate amount of yolk. And Ma'am. here the example is amphibian. हेलो मैम, कैन यू हियर मी? Amphibian basically. और hen का जो egg है ना वो polylecith है. हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? या मॅम लेसिथल एक फक्त ह्युमन्स मध्ये असतो का? हो, अलेसिथल is in human. ओके. Polylecith large amount of yolk. And that is in birds. So hen का egg is a polylecithal. Okay, reptiles and insect. Their egg is a polylecithal egg. ठीक है. Now, types of eggs based on the distribution of yolk. Yolk distribute कैसे हुआ है? So based on distribution of yolk. So the first is a isolecithal. मतलब क्या? Or which is also called as a homolecithal. Distribution, yolk का distribution कहाँ है? So पूरे egg में yolk का distribution. So is a isolecithal. So example is a eutherian, जो eutherian mammals, जो placental mammals है. Yolk is isolecithal. Yolk is distributed throughout the egg. So eutherian or you can say humans also. Like जितना भी negligible amount of yolk है वो पूरे egg में distributed है. हेलो. Not gathered at single particular place. Okay. Second loop. So it is a telolecithal egg. Telolecithal, yes. मॅम आयसोलेसिथल परत एक्सप्लेन करा ना, मला नाही कळलं. आयसोलेसिथल आपण काय करतोय? टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक. हा. तर असा एग जे कोणी प्लॅसेंटल मॅमल आहे ना, आपण म्हटलं ना की मायक्रोलेसिथल प्लॅसेंटल मॅमल जे आहेत त्यांचा योग जो आहे ना तो थ्रू आउट एग मध्ये डिस्ट्रीब्युटेड आहे. अच्छा, इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड, त्याच्यामुळे इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड. या होमोलेसिथल इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड. आता टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आठवत आहे का? हाँ, तो ये था, है ना, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. उसका सेंट्रोमर टेल पे होता है. तो टीलोलेसिथल एग मतलब पूरा योग जो है ना वो एक कॉर्नर में है और नीचे है पूरा. सो दे हैव द बिग साइटोप्लाज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिमल पोल. स्पर्म का एंट्री एग में होगा एनिमल पोल से. हाँ, एंड दिस इज अ वेजिटल पोल. नहीं, ये ऊपर वाला रीजन इज अ एनिमल पोल, नीचे वाला उसके अपोजिट इज अ वेजिटल पोल. पोल, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, एनिमल पोल. और स्पर्म का एंट्री तुमको सिंपल क्वेश्चन आता है, स्पर्म का एंट्री एग में किस साइड से होता है? तो इट इज वाया एनिमल पोल ऑलवेज. ओके. तो टीलोलेसिथल मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक और द योक व्हाटएवर इज प्रेजेंट एट द वेजिटल पोल. तो उसका साइटोप्लाज्म बड़ा दिखता है. सो दैट इज अ
टिलोलेसिथल, इसका एग्जाम्पल इज अ फ्रॉग. वेजिटल इधर लिखा है देखो, दिस इज अ वेजिटल पोल. थर्ड इज अ डिस्कॉइडल egg. Discoidal. This is C. Discoidal. तो डिस्कॉइडल में सिर्फ एक डिस्क रह जाता है साइटोप्लाज्म का, और ये पूरा भरा पड़ा एक योक है. दिस इज द योक. And this discoidal type of yolk you can see in birds, reptile, जो पॉलीलेसिथल वाले एग थे, birds and reptiles. And the fourth is centrolacithal egg. इसका जो योक है दैट इज इनसाइड द सेंटर. नहीं, एम्फीबियन हियर इन टिलोलेसिथल. सेंट्रोलेसिथल सेंटर में रहेगा और ये पेरीफेरी उसका साइटोप्लाज्म है. तो दिस इज इन इंसेक्ट्स. Ma'am, in centrolacithal, the yolk is at the center. Yeah, yolk is in the center, so it is a centrolacithal. Okay. Yeah. Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं क्लोज करती हूँ सेशन. Okay, ma'am.